इंडिया का एक जगह है। वो कहा, अभी तक मैं अपना आपको पूछ रहे हो, फ्रेगरेंस के दुनिया का रूट्स मैं ढूंढ के इतना सालों से आप एक्सपीरियंस के वजह से मालूम पड़ गया, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में रोसेस है, सैंडल्स है, वुड है, ये सब दुनिया से, ये इंडिया से ही जाके दूसरा जगह से बना के हम लोग लेके आए, खुशबू की तरफ से, परफ्यूम की तरफ से। इतना करोड़ों, हाउ मेनी पॉपुलेशन अपना इंडिया में, वेयर इज द परफ्यूमर, दैट्स द क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज नो परफ्यूमर्स इन इंडिया। हम लोग पूरा दुनिया में इतना सब कुछ में आगे निकला, खुशबू के दुनिया में इंडिया के एक नाम अभी तक, ये परफ्यूमरी अपना मैप होता है, उसमें पहले एक खनूज है, खनूज इतना पुराना, 100 साल के कितना कितना पुराना है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं निकला। मैं चाहता है ऐसी नहीं होने का। इंडिया कितना टैलेंट आदमी लोग है, टैलेंट बॉयज और न्यू जनरेशन के लिए थाउजेंड ऑफ, अपना करोड़ों आदमी लोग को इसमें काम मिलने के चांस है। क्यों? हर घर में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, खुशबू बना सकते हैं। उसके लिए इंडिया का ये नाम है ना, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने के लिए कोशिश करने के, इसके लिए अपना सपोर्ट चाहिए इंडिया को। That's it. ये भाई जो बोला था वही हम बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग इंडिया से जो शुरू कर रहा है, हमारा प्लान जो है, हमको लग रहा है इधर दुबई में, इंडिया में जो है अभी जो फ्यूचर जो आ रहा है 5 साल, इंशाअल्लाह ऊपर वाले चाहेगा तो 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक हम लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इधर डेवलप भी कर सकते हैं बिजनेस में। तो सबका, सब लोग का सपोर्ट हम लोग को चाहिए इसमें ज़रूरी, इंशाअल्लाह। Unit in a global range which can help the production of Yusufbhai towards global expansions, and we are also planning to uplift the total market value of India from whatever the current position is to a large scale. And in 5 years we are planning, as the chairman of the company said, we are planning to have our total value of the economy to boost from 5,000 crores to 10,000 crores. And I also take this opportunity to announce the date of our first outlet in India, which is in Hyderabad. So the brand himself, Yusufbhai, will be declaring the date and time of the inauguration. Good evening, madam. My name is Abdul Mufti Qatif, and like Yusufbhai rightly said, the very point of coming to India is that we want to bring perfumery, this industry. We want to make sure that this upliftment of this fragrance industry has to be there. As we can see that all the other sectors of India is growing rapidly, and fragrance industry needs some attention. And who could do this better than Yusufbhai? So that's how we have started. The idea has come into our minds that let's just do that in India, and that's how Yusufbhai wants to come up with that responsibility of being an Indian. So, and what could be the best place than Hyderabad? Definitely, there are a lot of better cities, good cities, but every city has their own distinctive fragrance in their own self. So we wanted to come up with Hyderabad, start with south and go ahead in north side also. So the point is not just the business here. We want to uplift and create more employment in India, making sure that it is beneficial for all the local perfumery, local oil makers in India, making them globally available. So that is the point, and inshallah, as Yusufbhai has rightly mentioned, that
we are going to introduce our first store in Hyderabad on 22nd of this month by 7 o'clock, inshallah. So that is how we want to do it. And from now on, we'll be taking over a lot of other states not just in Hyderabad, in other countries, in different states. So that's all it is. मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम इन द वर्ल्ड पूछ रहे, मैं बोल रहा अपना अपना पहचाना वाला का अपना अपना माँ बाप का खुशबू है, उसका जैसा खुशबू दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर सकते हैं इंडिया के चीज़ है वो ऊद है और अंबर है और वेटिवियर है, ये सब दुनिया का सैंडल, ये तो बेस्ट एक्सपेंसिव खुशबू है दुनिया का, बेस्ट फ्रेगरेंस है, ऊद है। एग्जैक्टली बोलेगा तो ऊद बोल सकते हैं उसमें। Type of sandal. You asking the brand name, there is, maybe you can mention, there is the expensive perfume in the already in the world mentioned that Shumukh. What is the name? Shumukh. Yeah. Shumukh. The expensive perfume. That's by jewelers like gold. Not about only the fragrances. The bottle also very expensive. That's why it's expensive. What's the price, sir? 1.5 million dirhams or something. Yeah, about the diamonds, a bottle, that's why. For example, I will ask the question. देखो, we have good clothes, we have mobile, we have multi-talent also, we have, there is many watches, whatever you have. But you don't have good smell. The blind people also can understand. He's looking, smelling good. MashaAllah, how he's smart, how he's, clean. That's one of the best things in the world, best beauty things. Better than cream, better than anything, I say, in my language, I say, only the perfume, the fragrance. Whatever you have, but you don't have good smell, gone everything is. Should be try to use everyone, inshallah, whatever, even the 10 rupees, use clean and fresh and good smell. दुनिया में इतना, how many fragrances in the world? Yeah, मेरा भाई is my brother. My skin smell, his skin smell is different. करोड़ों आदमी इंडिया में है, उतना फ्रेगरेंस के वो आदमी के बारे में बोलेगा तो दैट्स अ डिफरेंट खुशबू है, बदबू नहीं बोल सकते। अपना अपना भाई का खुशबू इतना दुनिया का बड़ा खुशबू है, अपना माँ का खुशबू, आपका फादर का खुशबू, उसके जैसा हर चीज़ में, प्लास्टिक में है, स्पॉन्ज में है, हर जगह में इंडिया में खुशबू है। ये हम लोग ये ब्लेंड कर सकते हैं, हर चीज़ हम लोग ब्लेंड करके कुछ ना कुछ। मैं सुना है वन ऑफ द बेस्ट खाने के जगह है हैदराबाद, ये स्पाइसेस और फ्रेग्रेंस, ये सब कुछ, वॉट एवर द नोट्स इन द फूड, द सेम नोट्स इन द फ्रेग्रेंस ऑल्सो. We can make the best things. India make the fragrance world part of the. We can make the capital of the fragrance. Inshallah, should become India. Inshallah, number one will be. I need all of the support. That's it. Regardless of whatever things I have in my business but I am a big fan of Yusuf Bhai because I really like the way he sees the fragrance world. We have got other brands as well. We have got other incredible brands in India already. But the angle where he sees the perfume, it is a very unique and different concept altogether. And I don't know whether you guys have noticed, he's talking about development in the perfume industry for 10,000 crores in India. It is not a joke. And the best part here is he is trying to figure out 10,000 jobs also at this time. So I just want to say it is incredible effort, Yusuf Bhai and team. Thank you so much. And we are really glad you inspire everybody. Because of you, there are a lot of people who has got hope. My younger brother,
he has got hope that he can do something in perfume. That is because of you. Shal. And mashallah, thank you so much for inspiring all of us, Okay. inspiring Hyderabad, inspiring India, and making it a mark in this industry in the whole world. Thank you so much. इंडिया का नाम आगे बढ़ने के लिए, खुशबू का दुनिया में इंडिया के एक नाम बनाने के लिए, forget about the Yusufbhai the brand also, but there is aroma roots from India. इंडिया से हर खुशबू सब कुछ इंडिया में ही है. इंडिया से हम लोग why there is no perfumer? That's a question mark. We can ask ourselves, where is the perfumer? Many engineers, many doctors, everybody is here. Where is the perfumer? That's the question. యూసుఫ్భాయ్ వేరే దుబాయ్లో మొత్తం బిగ్ బ్రాండ్ ఉన్నాయి. ఈ బ్రాండ్లో నేను తీసుకువచ్చిన టీమ్ ఇది మా యంగర్ బ్రదర్ ఆతిఫ్, యంగర్ బ్రదర్ ముజాహిద్ తీసుకువచ్చిన ఇక్కడ నుంచి 10,000 జాబ్స్ వస్తుంది. ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో బ్రాంచెస్ పెడుతుంది. అండ్ ఇన్షాల్లా విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్. అండ్ యూసుఫ్భాయ్ ఈజ్ హియర్. పర్సనలీ టేక్ కేర్ చేస్తా యూసుఫ్భాయ్ ఈ బ్రాంచ్లో, ఈ ఇండియాలో ఇప్పుడు మొత్తం బ్రాంచెస్ బాంబే, ఢిల్లీ, ఆసాం, ఎవ్రీవేర్ హీల్ పర్సనలీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. సరే నువ్వు రాయండి. 22nd ఓపెనింగ్ ఉన్నాయి, 22nd 7 PM ఓపెనింగ్ ఉన్నాయి. ఇన్షాల్లా నువ్వు రాయండి, ట్రై చేయి యూసుఫ్భాయ్, యూ విల్ లైక్ ఇట్. ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ హీస్ ఫేమస్ ఉన్నాయి. నువ్వు ప్లీజ్ రాయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ స్పీక్ తెలుగు లిటిల్ అప్ అండ్ డౌన్, बट प्लीज़. ये दुनिया में खुशबू फैलने के लिए इंडिया का जैसा दुनिया कुछ भी नहीं है. क्यों? इसका हर जगह में खुशबू है. वो फैलने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एरिया इंडिया है. 1000 ऑफ मिलियन ऑफ बोलते हैं मैम, इधर चांस है. हर घर में भी खुशबू बना सकते हैं, कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं खुशबू फैलने के लिए. दस हम लोग अभी फैक्ट्री का थ्रो ये तो ये अपना इंस्टीट्यूट ऐसी जगह कुछ बनाने के लिए इंडिया में कोशिश कर रहे हैं. वो ये अपना हम अगले 5 साल के अंदर इन नेक्स्ट 5 years we are expecting to have more than 10,000 job opportunities and boost the fragrance industry economy of India from its current state to more than 10,000 crores inshallah. So that is the brand vision for next 5 years. ओन मैन्युफैक्चरिंग से ही इधर शुरू करने वाला है. साथ साथ अपने साथ जो भी इंडिया में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग ऑयल कंपनीज एंड बॉटल सप्लायर्स जो भी है, जो भी परफ्यूम रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, सबको हम सपोर्ट करने वाला है. एंड इंडिया में एक शोर मचाएगा हम यूसुफभाई का या अब ये आने से. देखो बस explain to please that not only the means the price, there is bottles, there Bottle is glasses, there is bottle industry, there is many, I mean notes also, single notes. ये जो ऑलरेडी परफ्यूम इंडस्ट्री जो आप देख रहे, उसका पीछे भी बहुत इंडस्ट्री है. पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है, बॉटल इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडस्ट्रीज़ है. उसके साथ साथ जो सिंगल नोट्स जो भी है, सब इंडस्ट्री के लिए हम एक सपोर्ट बूस्ट करने के लिए आ रहे हैं. तो पूरा अभी टेक्नोलॉजिकल वाइज भी इंडिया बढ़ रहा है, टूरिज्म में बढ़ रहा है, टेक्सटाइल्स में बढ़ रहा है. उसके साथ साथ फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री विल बी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक all over the world from India, and also India should be the capital for the fragrance industry all over the world inshallah.